these two books, which has been written by me to Madam Mahinder Kaur. I may tell that this book, Beyond the Verdict, The Dynamics of Indian Courts, has been honored by the Chief Justice of India. That book contains journey from 1950 to till date, having leading judgments and telling that our constitution is not static. The judiciary, although has separation of power, has done lot of good work as per the welfare of our society. And my second book is Justice and Honesty in the Judiciary, the Need of the Day. That is pointing towards that no doubt our judiciary is doing something good, but it is standing on two pillars, justice and honesty. If these pillars start cracking, then our whole system of law will affect. That I want to say. In some of the cases, the judiciary has given judgments, not the justice. So I had pointed out few of the shortcomings which the judiciary can improve in the larger interest of society. And the rest of the things, Madam will explain what they want to say. Thank you so much, sir. I am honored to have these books with me. और ये कहीं ना कहीं पे बहुत दूर तक, बहुत एक लास्ट मैन जिसे हम कहते हैं कि उस तक भी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं जस्टिस की और विद ऑनेस्टी के साथ ये लोग पढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे हम पहले और फिर उनको बताएंगे और दे विल आल्सो लर्न मैनी थिंग्स अबाउट जो आपने रिवील की यहाँ पे और सच है और सच सामने आना चाहिए। वो आपने बखूबी इन दोनों किताबों में बाकी आपने एक्सप्लेन किया है और हम चाहते हैं कि ऐसे पिलर्स जो हैं और बने और जो आप लोगों को अवगत करवाएं कि जस्टिस एक्चुअली होता क्या है। बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ होता है, उसमें से काफ़ी कुछ रिवील इस बुक्स में किया हुआ है, इन दोनों बुक्स में। तो थर्ड वन अंडर प्रोसेस है और वो भी एक बहुत हेल्पफुल होगी हमारे लिए एंड खास करके जुडिशरी के लिए जो अपकमिंग न्यू कमर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगी। और अगेन थैंक यू सो मच सर। No, the ma'am were saying that third book, that is relating to land grabbing. The title of that book is Land Grabbing, A Curse to the System and Failure of Law Machinery. I want to say there are more than 60% cases that are related to land grabbing. This system of goons is going on in every state, and it is the time to check and arrest those goons so that the general public must have faith in our judicial system and the overall system. Otherwise, there are so many institutions, you can say police institution, Yes, judiciary institution, they all are going to fail as far as this land grabbing cases are concerned. So I will request the judicial system, the system that to correct themselves so that the general public is not affected. That's all. So mainly it is awareness and very nicely he has depicted in two books and the third one also. We will soon have the third one also. And thank you so much sir once again. My humble gratitude towards you sir. You have taken this responsibility. और जब तक ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे शख्स जो है हमारे बीच में है और ये सब अवेयर कराते रहते हैं और लोगों का बहुत भला होगा जिनको पता ही नहीं है एक्चुअली उनके राइट्स भी क्या हैं, तो उनके लिए भी बहुत कुछ ये जानकारी काफ़ी फायदेमंद रहेगी। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच।